Hey guys, welcome to my YouTube channel Literature Unveiled. So today we're going to talk about deconstruction, which is also a literary theory. So let's get started. So, deconstruction is unthinkable without post structuralism, and Jacques Derrida was a major figure in deconstruction theory. He wrote a book, Signature Sign and Play in the Discourse of Human Sciences, and in which we have been told that structuralists assume the center of meaning of some kind. Individuals assume central I in their own consciousness. The center is what guarantees our sense of unity for something that the unity of being. For example, God is God's existence is also the center of the universe that we live in, and then we talk about human beings, and we are also a center of something. Okay, so for Derrida, recent developments in Western thought have led inevitably to the decentering processes, like decentering where there is no center present. और Derrida कहता है कि वेस्टर्न थॉट में जब recent developments जो देखी जा रही हैं उसमें हमें लगता है कि जो यूनिवर्स है वो डिसेंटर हो गया है, विच हैज़ नो रेफरेंस पॉइंट्स, नो सेंटर. लेकिन ट्रेडिशनली ये था कि हमारे पास सेंटरिंग प्रोसेसेस थे, जैसे बीइंग, सेल्फ, एसेंस, गॉड, ये सब कुछ, और ये ह्यूमन की नीड है, और इस नीड को हम लॉजोसेंट्रिज्म भी कहेंगे, which is defined as the analysis of literature focusing on the words and grammar to the exclusion of context and literary merit. So अब इसमें हम लॉजोसेंट्रिज्म में ये पढ़ते हैं कि ये एक एनालिसिस है लिटरेचर का जिसमें हम सिर्फ ग्रामर और वर्ड्स पे फोकस करते हैं, जिसमें कॉन्टेक्स्ट और लिटरेरी मेरिट को हम एक्सक्लूड कर देते हैं. ठीक है, अब जो ये वर्ड है लॉगोस, वो ग्रीक वर्ड है. ठीक है, और ये इस क्रिश्चियन बिलीफ को एक्सप्रेस करता है कि प्राइमरी कॉज ऑफ ऑल थिंग्स वाज द स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड. और ये लोग ये बिलीव करते हैं कि जो वर्ड लॉगोसेंट्रिज्म है ना, क्योंकि जो स्पोकन वर्ड है वो हमारी थॉट से ज़्यादा क्लोज होता है बजाय रिटन वर्ड के. इसके बाद हमारे पास आ जाता है फोनोसेंट्रिज्म. फोनोसेंट्रिज्म इज डिफाइंड एज द आइडिया दैट साउंड्स एंड स्पीच आर इनहेरेंटली सुपीरियर टू रिटन लैंग्वेज. इसका ये मतलब है कि जो साउंड्स हैं, स्पीच हैं, वो रिटन लैंग्वेज से सुपीरियर होते हैं, क्योंकि जो साउंड और स्पीच है वो थॉट से ज़्यादा क्लोज होता है रादर देन रिटन लैंग्वेज. ठीक है, when we hear speech, we assume speaking presence of the person who is trying to talk indirectly with us. For example, if it is a third person who is not physically available but we are hearing them, we think of their presence around us, right? If we see writing leads more readily to interpretations because we reread it and analyze it again. Because if someone is speaking to us, we are going to directly communicate with them and we are understanding them. We don't need to reread it or rehear it and analyze it. We are just processing it together. But on the other hand, if it is about writing, if we are reading and writing, we need to sometimes reread it and analyze it, what is being told in the words or the paragraph. Okay, now we come towards how Derrida tries to deconstruct the ranking order of speech and writing. So he kind of tries to deconstruct the whole way of thinking that both speech and writing share writerly features. He says that speech and writing are both signifying processes which lack real sense of presence, और ये presence होती है either speaker की या author की. ठीक है, और ये किस तरह होती है, क्योंकि अगर हमारे सामने कोई वर्क आया हुआ है और हम उसको रीड कर रहे हैं तो हमें उसकी प्रेजेंस फील नहीं होगी जिसने लिखा होगा, और उसने किस स्टेट में लिखा होगा वो भी हमें फील नहीं होगा. तो इसलिए जो स्पीच है या जो राइटिंग है वो दोनों इस तरह से लैक करते हैं किसी भी ऑथर या स्पीकर की प्रेजेंस को. Now we are going to find more assertions of Derrida. He says that all speech is always already written, and then he says that nothing new is ever possible. This is what he develops a notion of violent hierarchy. Now Derrida is telling us कि जो भी स्पीच कभी भी स्पीक की गई है वो ऑलरेडी हमेशा से लिखी हुई थी और कुछ भी नया पॉसिबल नहीं है. और जब हम एक हायरार्की क्रिएट करते हैं स्पीच की ओवर राइटिंग, तो हम वायलेंस करते हैं ट्रूथ के साथ हायरार्की में. क्योंकि अगर हम फॉर एग्जांपल कहते हैं कि ए इज़ प्रायर टू बी, और जब बी पहले ही इम्प्लाइड होता है, इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि गुड और ईवल जब हम बाइनरी अपोजिशन में देखते हैं, तो अगर हमने ईवल का पता लगाना है तो हम
गुड को देखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह ये टर्म्स आपस में एक दूसरे के ऊपर क्लोजली एसोसिएटेड होती हैं और इनको अकेले में बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता। और हम ये भी नहीं कह सकते कि जो गुड है वो सुपीरियर है ईवल से या ईवल है वो सुपीरियर है गुड से। Okay, now Derrida gives us a new approach of literary analysis. He says that all texts, whether it is literary or non-literary, they can be deconstructed or dismantled. So this dismantling of texts also reveals the inner inconsistencies of texts, where text might appear to imply one thing and it can also be shown to imply its opposites. For example, binary oppositions. See, if there is truth, if it is implying truth in its text, then it might also apply falsity. For example, अगर एक text में truth given है जो हमें surface meaning में समझ आ रहा है, जो surface पे है, लेकिन अगर हम उसके डीपर मीनिंग्स में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वो जो टेक्स्ट है वो उसका बाइनरी ऑपोजिट यानी कि फॉल्स भी बता रहा है टेक्स्ट में, ठीक है। Okay, now coming towards Paul Deman, who was an American critic who has also applied deconstruction, but he has applied his deconstruction to the Romantic poets, and he also argues that, in fact, that these Romantics actually deconstructed their own writing by revealing the desired presence in their poetry, which is also absent or deferred always in the past or future, right? And now he's talking कि ये जो Romantics थे उन्होंने अपने टेक्स्ट में अपनी राइटिंग में खुद ही deconstruction की थी, क्योंकि वो चीज़ें उनके टेक्स्ट में एब्सेंट थी जो एक्चुअली डिज़ायर की जाती थी, ठीक है, या फिर वो उससे डेविएट कर जाते थे अपने टेक्स्ट से जिसके ऊपर उन्होंने बात करनी होती थी, मतलब अपने टॉपिक से वो लोग डेविएट कर जाते थे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टू वर्क्स in which Paul Liman has explained his methodology. Number 1 is blindness in sight, and number 2 is allegories of reading. He applies his own terminology, which is different to that of Derrida. He, in his first book, proposes a notion that critics only achieve insight through certain blindness to some aspects of what they are doing. इसमें ये वो बात कर रहे हैं कि क्रिटिक्स ने जब कोई बात करनी होती है तो वो कुछ एस्पेक्ट्स के लिए ब्लाइंड हो जाते हैं, उनको इंसाइट शो नहीं करते या उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते अपनी राइटिंग में। इफ़ वी टेक एन एग्जाम्पल, in a poetry, if he is using a certain word which has two different meanings which convey ambiguities in text, he won't care about the ambiguities. He's going to write the word anyway in his poetry, which means he's trying to turn a blind eye to the text, right, to some aspects of what he's doing. In his second work, Allegories of Reading, he analyzes the use of figure of speech. For example, he argues that figure of speech deviate the conventional logic of thought. He says that with the use of figures of speech, poets mean one thing and they say something else. For example, metaphors and metonymy. Now, in the end, he is telling us that all language is essentially rhetorical because language is figurative and it cannot ultimately refer to or express to non-linguistic realities, which is why language is rhetorical for Paul Deman. So guys, this is all about deconstruction. I hope you all understood deconstruction. I'm also hoping that you guys liked this video. So please like, share and subscribe to my channel and share as much as you can. We'll see you in the next video. Bye.